Bonjour et bienvenue à French learning classes. Today in this video you will learn the verb aller. Okay, the verb aller, which means to go. Though the aller verb is ending with er, but it is not conjugated in other er verbs. ठीक है? Because it is an exception in er group of verbs. ठीक है? So now see its conjugation. Here singulier and pluriel. ठीक है? There are two forms, singular and plural. So here we have je vais. Okay, je vais. First of all, like any other video, je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elle. These are the subject pronouns. ठीक है? And we have to conjugate the verb aller with these subject pronouns. ठीक है? So we have je vais. Vais means aller. Here aller verb is conjugated like vais, way. ठीक है? Because of je के साथ यहाँ पर वे लगता है. वे हम आले को यूज़ कैसे करते हैं? वे, अकॉर्डिंग टू je. एंड je वे मीन्स आई गो. ठीक है? je मीन्स आई एंड वे मीन्स गो. आले मीन्स टू गो. ठीक है? कहीं जाने के लिए, गो, गोइंग. सो दीज आर द आले वर्ब्स. ठीक है? je वे. नाउ सेकेंड इज tu vas. ओके, tu vas means you go. फिर il va and elle va. Okay, il va, elle va, which means he goes, she goes. ठीक है? il means he, va means goes. il va, he goes, and elle va, she goes. Now nous allons. Okay, nous allons. Here we have liaison with s and a. ठीक है? तो हम इसको मिला के पढ़ते हैं बिकॉज ऑफ liaison. nous allons. ठीक है? विच मीन्स वी गो. vous allez. here also a liaison. vous allez, you go. ils vont. okay, ils vont. here also liaison and here also. so ils vont, they go. ठीक है? and elles vont means which means they go. but ils vont is used for masculine group and elles vont is used for feminine group. ठीक है? now we repeat one more time. ठीक है? on répète encore fois. je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont and elles vont. ठीक है? नाउ वी सी एन एक्सरसाइज इन इट. ठीक है? अब हमें यहाँ पे आले को पुट अप करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ठीक है? सो फर्स्ट सेंटेंस इज ऊ डैश त्यू. ओके, ऊ मीन्स वेयर, डैश त्यू, त्यू मीन्स यू. सो वेयर आर यू. ओके, या वेयर आले मीन्स गो. सो वेयर आर यू गोइंग. ठीक है? सो हियर वी पुट आले अकॉर्डिंग टू द त्यू. सो त्यू के साथ हम आले को कैसे कॉन्जुगेट करते हैं? वा, त्यू वा. ठीक है? सो ऊ वा त्यू, ऊ वा त्यू, विच मीन्स वेयर यू आर गोइंग. ठीक है? ऊ वा त्यू. नाउ सेकेंड वर्ड सेंटेंस इज नू डैश आ पारी. नू डैश आ पारी. सो विद नू what we have to put up आले form is nous allons, nous allons à Paris, nous allons à Paris, which means we are going to Paris. ठीक है? we are going to Paris. nous allons à Paris. now third one is je dash au théâtre. okay, je dash au théâtre. I go to the theater. I go to the theater. So with je we have to add vais. Okay, je vais au théâtre. I go to the theater. ठीक है? je vais au théâtre. Now fourth sentence is Cécile dash à la gare. Okay, Cécile goes to the station. gare means station. ठीक है? Cécile goes to the station. So what we have to put for Cécile? Cécile is feminine. ठीक है? elle. Okay, which use elle. elle va.
So that means Cecile va à la gare. Cecile goes to the station. ठीक है. Now move to the fifth sentence, which is les touristes dash à l'hôtel. Okay, les touristes dash à l'hôtel, which means the tourist go to the hotel. The tourist go to the hotel. So here tourist में हमारे पास masculine और feminine क्या है यहाँ पे कोई mention नहीं है. Okay, so then we assumed that tourist is masculine. ठीक है. So we have to put according to the ill. Okay, according to the ill. So ill वो, ठीक है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो. Les touristes vont à l'hôtel. ठीक है, that means the tourists go to the hotel. And now sixth one is vous dash de la natation. Vous dash de la natation. ठीक है. You here what we put, you मतलब वो के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे आले. Vous allez de la natation. We are going to the swimming. ठीक है. natation means swimming. Natation means swimming. Okay. We are going to the swimming. ठीक है. Vous allez de la natation. So this is the aller verb. ठीक है. ये आपने सीखा अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कीजिए. एंड aller verb जो है वो एक्सेप्शन है ER फॉर्म ऑफ ग्रुप्स का. ठीक है. So you can practice it and learn it, pronunciation as well as conjugation. ठीक है. That's it for today. Merci beaucoup.